Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. I am Umang, the faculty for Environment and Ecology. And today in this session, we are going to see the questions that have been asked in your GS paper 3 of Mains 2025 from the Environment and the Disaster Management section. Okay. On an average, if we see about the paper of अगर GS paper 3 की हम बात करते हैं तो जो हमारे पांचों segments हैं, they have an equal weightage in the paper. We can see almost science and tech, economy, agriculture, internal security, environment and disaster management. We can see roughly that all the sections have been allocated 50-50 marks. Okay, so there's an equal weightage that has been given. Paper की अगर हम बात करेंगे तो paper has been from easy to moderate level. Certain questions you might feel that yes, they are too basic, they are directly from the syllabus. Yes, of course, syllabus is important for you. Okay, वहां से आपको direct topics मिल रहे हैं, but there were certain questions which require lot of aptitude and application also. Okay, so specifically disaster management और environment के दो questions ऐसे थे जिसमें आपका एक wider perspective check किया जा रहा था. Okay, so let's just see the questions. What they have asked, how can we tackle these questions? Okay, so let's begin with the first one. The first question is, how can India achieve energy independence through clean technology? That is the first part of the question. And the second part says, how can biotechnology play an important role in this? So I would say this question is requiring your knowledge both from the environment section and also your science and tech, where you have biotech. Okay, so it's interlinking both the things, both the topics. Okay, so the first part says, how can India achieve energy independence, and specifically through clean technology? And second thing is, how can biotechnology play an important role? Now, if you must have read the economic survey, तो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 10 में जिसको हम अडेप्टेशन मैटर्स से जो मेंशन है, दैट इज क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, वहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी फ्यूल्स. ओके, तो अभी तक हम फॉसिल फ्यूल्स पर रिलाई कर रहे थे, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, इन पर हम रिलाई कर रहे हैं. एंड अल्टीमेटली every country is trying, or even India is transitioning towards the cleaner sources. Cleaner energy sources की जब हम बात करें तो we have solar energy, we have hydro energy, okay, we have wind energy, okay, and also we have another one that is nuclear energy. That is also another alternative for the fossil fuels. But अगर at present हम देखें level, even the developed countries have not come to that maturity कि हम replace कर दें fossil fuels को. We are not in that position right now. Okay, so certainly that is one thing. And second thing is that these renewable energy sources or the clean energy sources, इनके भी अपने अपने challenges हैं. Challenges जैसे number one, there is lot of investment that is required for the grid integration. Then for the infrastructure, for the storage batteries to meet the intermittencies, that is second thing. Then there are geographical constraints. Okay, then when we come to nuclear energy, safety concerns आ जाते हैं nuclear energy के ऊपर. Then nuclear energy की जो technology है, that is also in the hands of few countries, so its expansion is also limited. Then we also have the geographical concentration of the uranium, the major source that is utilized, and the other critical minerals that are utilized for the nuclear energy. That is also one challenge. And of course, still the uranium extraction, which utilizes sulfuric acid, now that is also getting impacted because of the highly relying on the fossil fuels for its supply chain. तो इस वजह से ये challenges हैं हमारे renewable energy sources या cleaner energy sources. ठीक है, and उसके साथ साथ हमारे पास अब आता क्या है दूसरा मेथड, we have biotechnology. How can we utilize biotechnology? तो biotechnology के लिए हम पढ़ चुके हैं, we are studying that we are having the biofuels. Okay, we are utilizing biofuels. We have 1, 2, 3, 4 generation biofuels are there. We are working on the green hydrogen plants. Then we have the ethanol blending program.
all of these are what? All of these are the areas where you are utilizing biotechnology. We have Gobardhan. Okay, Gobardhan scheme is there. Biogas. Then we have PM Jeevan scheme. Okay, or Satat initiative is there. So that is where we are utilizing biotechnology. Okay, so this was a simple question where you could write it if you had studied the major initiatives, and all of this was in news. ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया एकदम अलग से पूछा. ठीक है, let's come to the second question, that is, what is carbon capture, utilization, storage, CCUS, and what is its potential role in tackling climate change? तो सबसे पहले तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन CCUS होता क्या है? इट्स वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ओके, नाउ विद द नेम इट कम्स. ओके, बट बिफोर दैट ये क्वेश्चन मेंस में आया है, और इसी साल के प्रीलिम्स में वी हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एयर कैप्चर. तो अगर आपने डायरेक्ट एयर कैप्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यू मस्ट हैव स्टडीड. ये कोई नई चीज नहीं है, ये 3-4 सालों से बहुत कॉमन टॉपिक है. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन इन न्यूज इन द रिसेंट इयर्स. इट्स हैज बीन देयर फ्रॉम 2021 ओनली. ओके, तब से हम इसको पढ़ रहे हैं, कार्बन कैप्चर क्या होता है. तो व्हाट वी आर डूइंग अल्टीमेटली कार्बन कैप्चर, विद द नेम इट कम्स. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग, we know that India is the third largest emitter of carbon dioxide. Okay, and there are major sectors जहां से बहुत ज्यादा emissions होते हैं, for example power sector. So this technology is doing what? Carbon capture utilization is doing what? It is trying to reduce the emissions from hard to abate sectors. For example steel plants, ठीक है, cement industries, okay, power sectors. वहां से हम carbon emissions को कैसे reduce करें, that is what is carbon capture and utilization technique. okay, now अब इस टेक्निक में हम करते क्या है? कार्बन कैप्चर. तो सबसे पहले एट द सोर्स जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट हो रहा है, वी आर कैप्चरिंग इट. ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग इज ईदर वी कैन स्टोर इट. तो स्टोरेज मतलब वी आर स्टोरिंग इट इन दी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस अंडरग्राउंड. Okay, or in aquifers we are storing it. There is an impermeable rocks layer that is there, so that वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एग्जिट ना हो या एंटर ना करे एटमॉस्फेयर. so that is carbon storage part. now second part is carbon utilization. utilization meaning कार्बन कैप्चर किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर नहीं निकलने दिया सोर्स से, एंड उसको हमने पहला स्टोरेज कर दिया, दूसरा अब उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं. वी आर यूटिलाइजिंग इट इन डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल वी कैन यूटिलाइज इट फॉर द डायरेक्ट यूज एज अ सॉल्वेंट, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. वी कैन यूज इट इन द फूड इंडस्ट्री. वी कैन यूज इट फॉर द एनहांस्ड ऑयल रिफाइनरीज, okay, where we are injecting carbon dioxide gases so that we can have enhanced oil recovery. okay, oil की recovery के लिए. या फिर बायोलॉजिकल वेज में अगर हम देखें तो वी कैन यूटिलाइज इट इन द बायोफ्यूल्स, वी कैन यूटिलाइज इट इन केमिकल्स, पॉलीमर्स, मेथनॉल मेकिंग में, प्लास्टिक्स मेकिंग में. ऑल ऑफ दीज प्लेसेस वी कैन यूटिलाइज इट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ऑल ऑफ दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन यूटिलाइज इट. सो दैट इज कॉल्ड कार्बन यूटिलाइजेशन. नाउ हाउ विल इट हेल्प इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज? ऑफ कोर्स हम एमिशंस को रिड्यूस कर पा रहे हैं, और वो भी उन सेक्टर से जहां से बहुत ज्यादा एमिशंस हो रहे हैं. तो दैट इज फर्स्ट थिंग, इट इज हेल्पिंग इन अबेटिंग और रिड्यूसिंग द एमिशंस, राइट. देन सेकंड मेजर थिंग इज दैट दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग और अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क दैट वी आर डूइंग अलोंग विद द क्लीनर फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग. मतलब जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ पैरेलली हम इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें, so that we meet our net zero targets, we reduce our emissions. okay, so it is not a silver bullet. Carbon capture utilization is not a silver bullet. okay, it will work complementary or hand in hand simultaneously with the other initiatives that are going. So it will act as a bridge technology. okay, so it will act as a bridge technology
for India to achieve its net zero targets. Okay, so that is about carbon capture and utilization technique. Okay, and this was the question. It's a way of carbon sequestration, direct air capture. That's right. Of course, it's used for plastic production and in food processing. I've covered it here. And of course, it can also be used in the aviation sector. Okay, so this was the second question. Right. Coming to the next question, that is seawater intrusion in the coastal aquifers is a major concern for India. सी वाटर इंट्रूजन, इंट्रूजन मतलब एंटर कर रहा है सी वाटर, ठीक है, और कहाँ एंटर कर रहा है, कोस्टल एक्विफर्स में एंटर कर रहा है. सो कोस्टल एक्विफर्स जो हो गए वो हमारे फ्रेश वाटर सोर्स हो गए, ठीक है, एंड दिस सी वाटर वुड बी सॉल्टी वाटर. Okay, it's salty water. It's a major concern for India. Of course, coastal communities are the major ones that are impacted. In the same chapter of the economic survey, chapter 10 adaptation matters, वहीं पर coastal communities की resilience के बारे में जहां बात करी गई है, there we are talking about the sea level rise. So what is happening? Sea level जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसकी वजह से that's because of it, the implication is that we are having the salt water that is intruding the coastal aquifers, okay, or it is mixing with the fresh water. Okay, now why sea level rise is happening? Because of climate change, because of global warming, and also over exploitation of the groundwater resources. We are having sea water intrusion. इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन जब हम करते हैं, ठीक है. देन थर्मल एक्सपेंशन जब होता है वाटर का, सी वाटर जो होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इफ इट इज हीटेड इट विल एक्सपैंड मोर, राइट, एंड दैट्स हाउ इट इज गेटिंग मिक्स्ड विद द फ्रेश वाटर रिसोर्स, राइट. सो दीज आर द मेजर रीजंस. सो इट्स बेसिकली ये जो सी वाटर इंट्रूजन है, इट्स एन इम्प्लीकेशन ऑफ द सी लेवल राइज दैट इज हैपनिंग, ठीक है, उसी की वजह से हो रहा है, ठीक है. इट्स अ मेजर कंसर्न इन इंडिया एंड द कोस्टल कम्युनिटीज, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न साइड and the eastern sides are the major ones that are impacted. Okay, what are the causes of seawater intrusion and the remedial measures? Okay, so we have sea level rise, that is one thing. Then over exploitation of the groundwater resources, that is another thing. Then we are the shrinking mangroves, okay, coastal urbanization. These are all the reasons for seawater intrusion. Coastal urbanization, then we have over exploitation of the groundwater resources, then we also have the at times what happens, जो fresh water आता है हमारा, जो usually the pressure is like that कि जो rivers आती है हमारी, the rivers are bringing the fresh water and they go down the slope, okay, and it avoids or it does not let the salt water to mix, but that balance has also changed because of the all of these major reasons which I have highlighted. Now, what should be the remedial measures for that? We have the coastal regulation zones, okay, CRZ norms are there, that needs to be followed. We have the National Coastal Management Plan is there, National Coastal Management Plan को follow करेंगे हम, उसके guidelines को follow करेंगे. Then for the mangroves, what we can do? We have the Mishti scheme that is there. Mishti scheme is there. And what is actually happening with this salt water intrusion is that it, first of all, it will impact the local people. It will be unfit for drinking. It will be unfit for drinking. It will also be unfit for cultivation, okay, of the crops. So crops नहीं grow हो पाएंगी, right? अगर crops grow हो रही हैं तो of course yield would be affected. So crop yield is affected, and crop yield is affected. Of course, economy का, agriculture का major sector would be affected. And the ultimately livelihood of the people would be affected. Salt water can also cause infrastructure damage. It can lead to corrosion of the major infrastructure also. So that are all the implications of the salt water intrusions. Okay, and what should be the remedial measures? All the schemes that the government is running. The Mishti scheme is there to make artificial reefs. Okay, to stop coastal urbanization, to have the CRZ norms to be followed, stricter EIA norms to be followed. Okay, so all of these things should have been written in your answer, right? Then coming to the next answer, next question, that is, mineral resources are fundamental to country's economy
and these are exploited by mining. Then they are saying, why is mining considered an environmental hazard, and what should be the remedial measures to reduce the environmental hazard? Okay, this is one of the questions which we can say कि थोड़ा different है या twist करके पूछा गया है, because यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था, ठीक है, इलीगल माइनिंग के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली माइनिंग को नहीं पूछा. तो अगर आपने सैंड माइनिंग पढ़ा तो ओवरऑल एज वन ऑफ द डायमेंशन यू कैन राइट द आंसर. ऐसा नहीं है कि आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, राइट. This is one of the questions which we can say it's little out of the box, okay, or it is requiring a wider application of your mind. Now mineral resources जो है हमारे, now they are very important. Why? They are important for the country's economy, for our vision of Atmanirbhar Bharat, okay, for our Make in India projects. उसके लिए mineral resources बहुत important है, ठीक है. But ये जो mineral resources का exploration होता है, it comes with a ecological cost. It comes with an ecological cost. Why? Because it will lead to what? It will lead to deforestation. It will lead to overexploitation of the resources. It will lead to displacement of the people. It will lead displacement of the people, specifically if I talk tribals or the local people. Then it will lead to groundwater deterioration. Okay, all of these are the major reasons, major things that will happen when we are exploring the minerals. Along with that, it has the mine tailings or mineral tailings, for example, that are the leftover parts. Okay, जो leftover parts होते हैं after the mining, or small metals, simpler metals, which are still very hazardous and toxic. Okay, so they can go and leach into the riverbeds or in the groundwater. So they can cause contamination or pollution of the local ecosystem. They can be intoxicated by the people. So if there are people who are involved in the sand mining activities, जो सैंड माइंस में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं. So that is another thing. Health constraints, respiratory issues. All of these are what? These are all the environmental hazards or human hazards that can be faced with the mining sector, right? What needs to be done? So we need to have what? We need to have a sustainable mining. Okay, that is one thing. Then we can reclaim the old mines or abandoned mines. That is another thing. We can reclaim that. Okay. Then we have the MMDR Act. ठीक है, हमारे पास MMDR Act है, Mines and Minerals Act 1957. अभी इसमें amendment भी आया है, ठीक है. So we should, our policy should be in line with the regulations or the provisions of the act. Then again the stricter EIA norms यहाँ पर भी effective होंगे. Coastal regulation यहाँ पर भी करेंगे अगर the mines are there aligning with the coastal areas. So these are all the remedial measures that are required. Ultimately, we need to know that we have to balance both our economy, our development also, but the environment also. Okay, so and there are at times mining incidents also. हमने देखे हैं बहुत सारी जगहों पर mining incidents हुए हैं. Okay, so the labor, the people who are working on those mines, that they are also hazardously affected by the mining conditions or the places where they are working. So all of these are the things that needs to be studied or written in your answer. So mineral resources are fundamental to country's economy. Yes, for our vision of India 2047, for our Make in India, हमें चाहिए critical minerals चाहिए, हमें अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी है. ऑफ कोर्स वी विल डू द एक्सप्लोरेशन, बट इट हैज टू बी डन इन अ वेरी रेगुलराइज्ड मैनर, इन अ सस्टेनेबल मैनर. ओके, एटलीस्ट अबैंडन्ड माइल्स को हम रिक्लेम करें. ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड हैव बीन देयर इन योर आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18. नाउ दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नॉट very new. Of course, if you have studied your environment, आपने ये सब पढ़ा है, ठीक है,
और आपको उसी चीज उन्हीं चीजों को यू हैव टू जस्ट मेंशन इट, ओके, वट एवर यू हैव स्टडीड इन अ जस्ट, ओके. सो दे हियर दे आर टॉकिंग अबाउट राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स under the Paris Agreement 2015 and mention how these have been further strengthened in COP 26 2021. ठीक है. In this direction, how has the first nationally determined contributions intended by India been updated in 2022. ठीक है. तो अभी अगर हम देखें जो रिसेंट हमारी COPs हुई थी, COP 29 और COP 30, ठीक है, वहां से उधर से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है, बट देयर वी वर टॉकिंग अबाउट अगेन द अपडेशन ऑफ द NDCs, INDCs आई वुड से, एंड हियर द प्रॉब्लम स्टक वाज ऑन द फाइनेंशियल इशू. वहां पर हम थोड़ा स्टक हो गए थे, ठीक है. बट अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें तो 2015 इंडिया बीइंग सिग्नेटरी टू द पेरिस अग्रीमेंट, राइट, वी हैड साइंड इट एंड अल्टीमेट एम क्या था हमारा, that we will reduce the greenhouse gas emissions per GDP at the 33 to 35% from the 2005 levels. हमने ये बात करी 2015 में. And we also talked about creating an additional carbon sink, okay, 2.5 to 3 billion tons carbon sink की हमने बात करी, right. Then we come to COP 26. COP 26 में जब आते हैं तो India talks about its Panchamrit strategy. So we had the Panchamrit strategy whereby we are talking about reaching the non-fossil fuel strategy, okay, that we will be capacity हम अपनी increase कर लेंगे by 500 gigawatts. Then we have fulfill the 50% energy requirements by renewable energy, right. All the Panchamrit reduce the carbon intensity so 45%, okay, achieve the target of net zero by 2070. ये सब हमने पंचामृत में करा. 20 पंचामृत स्ट्रैटेजी दी हमने 26 में. देन इन COP 26, ठीक है. देन इन 2022 we talked about, we have done our first updation of the INDCs, ठीक है. ये हमने क्यों करा, हमने इसलिए करा so that we can align our targets with the commitments that were given at the COP 26, ठीक है. तो अपने पंचामृत स्ट्रैटेजी को अलाइन करते हुए, ठीक है, फाइनेंस को एक्सपैंड करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 2022 में वी ऑल्सो हैव टॉक्ड अबाउट मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसकी बात करी गई, ठीक है. सो दैट वी ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज एंड वी बिकम sustainable in our living. That was talked, that was introduced during this 2022. And also another concept that was introduced was the circular economy, whereby we are maximizing the usage of the product, okay. So we are trying to maximize its utility in the entire chain of from the production to its disposal. So all of this has to be written in your answer. तो हमने स्टार्ट कर रहा था 2015 से, जहां पर हमने बात करी कार्बन सिंक बनाने की, जहां पर हमने बात करी 33 to 35% ऑफ दी 2005 लेवल्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस करने की. उसके बाद वी कम टू COP 26 वेयर वी हैव द पंचामृत स्ट्रैटेजी. 22 में वी हैड द फर्स्ट अपडेशन ऑफ द INDCs वेयर we were trying to align it with these panchamrits, and of course we also introduced the mission life and the circular economy concept, okay. So this is how you had to tackle this question, okay. So that's all for the major questions from the environment and disaster management section. If you have any doubt, just let me know in the comment box. I will definitely try to reply for that. Thank you very much.